Ladies and gentlemen, in this Ifactner's learning video tutorial, we will learn to spell different Urdu words and form a complete Urdu sentence by translating Urdu sentences and words from English language. This lesson focuses on the words and sentences regarding the hair salon or the barber shop. Let's start our tutorial and learn to type in Urdu language at the hair salon. Par is at the, and hair salon can be translated as balon ka salon. Now, to form a sentence, at the hair salon we will say balon ke salon par. Now we need to type these words and sentences in Urdu language, and to do that we will install the Urdu language pack or the Urdu keyboard on Windows or Chrome, and then switch to Urdu keyboard. Now I am switching to the virtual Urdu keyboard, and first I will type par. Par is pe re, par. Pe and re is par. Balon ka salon. Balon can be spelled as be alif ba, lam, wow, and noona. Balon. Ka is kaf alif ka. And salon is an English word, but it has been imported in Urdu, and we can write it as sin, ye, lam, wow, noon. Now let's write balon ke salon par. We can write balon ke salon par as be alif ba, lam, wow, and noon na. Balon ke, kaf badi ye, ke salon, sin, ye, lam, wow, noon, salon. And now we need to write par, pere, par, balon ke salon par. The next sentence is I need a haircut. I is translated as mujhe, need ज़रूरत, a एक haircut बाल कटवाने. Now to translate I need a haircut in Urdu we will say मुझे बाल कटवाने की ज़रूरत है. Now let's see how do we spell mujhe and how do we type it. Mujhe is mim, jeem, he, muj, and badi ye, mujhe. Zarurat is zwad, re, wow, re, te. Zarurat. एक alif, ye, kaf. बाल कटवाने is be alif lam, बाल, and कटवाने is cut, kaf te, cut, wow alif noon बड़िए, कटवाने. Now we need to translate मुझे बाल कटवाने की ज़रूरत है. Now let's type this sentence, which can be typed as mim, jeem, he, बड़िए, मुझे बाल, बे अलिफ लाम, बाल, कटवाने, काफ टे, वाव अलिफ नून बड़िए, कटवाने की, काफ छोटी है की, and ज़रूरत is ज़्वाद रे ज़र and वाव te, ज़रू. We need to write ज़्वाद रे वाव रे ते, ज़रूरत. ज़रूरत है, मुझे बाल कटवाने की ज़रूरत है, and we use hyphen instead of a full stop in Urdu. मुझे बाल कटवाने की ज़रूरत है. The next sentence says, would you like to go to the barber shop?
Now would can be translated as गे or गी. You, आप, like, चाहें, to go, जाना, to the, के लिए, barber, नाई, shop, दुकान. Now let's translate this whole English sentence in Urdu. Would you like to go to the barber shop? क्या आप नाई की दुकान पर जाना चाहेंगे? Now let's type each and every word and spell it. Now we write गे as गाफ बड़ी ए, गे. And गी can be written as गाफ छोटी ए, गी. आप, अलिफ मदा and पेसाकिन, आप. चाहें, चे अलिफ चा, हे, ये and नून ना. चाहें. जाना can be translated as जीम अलिफ जा, नून अलिफ ना, जाना. के लिए, काफ बड़ी ये, के, लाम, ये, हमजा, बड़ी ये, के लिए. नाई, नाई can be written as नून अलिफ हमजा छोटी ये, नाई. दुकान can be written as दाल पेश काफ दुक, अलिफ दुका and नून साकिन, दुकान. Now let's write or type क्या आप नाई की दुकान पर जाना चाहेंगे और चाहेंगी. क्या, काफ ये अलिफ, क्या. आप, अलिफ मदा पेसाकिन, आप. नाई, नून अलिफ हमजा छोटी है, नाई. की, काफ छोटी है, की. And दुकान is दाल काफ अलिफ नून. पर is पेरे पर. जाना, जीम अलिफ जा, नून अलिफ ना. चाहेंगे, चे अलिफ हे, ये and नून ना. गे will be used for a male person and for female we will use गी. चाहेंगे for male and चाहेंगी for female and in the end hyphen. क्या आप नाई की दुकान पर जाना चाहेंगे? Would you like to go to the barber shop? And in the end we need to add a question mark because it's a question. And because Urdu is written from right to left, therefore we use the mirrored question mark or inverted question mark. Now let's translate these words. No, I prefer a hair salon. No is नहीं, I मैं, prefer तरजीह देता हूँ for male and तरजीह देती हूँ for female. A एक, hair salon बालों का salon. And we can translate this English sentence no I prefer a hair salon in Urdu as नहीं, मैं बालों के सैलून को तरजीह देता हूँ. Now let's learn to spell and type नहीं, which is noon, he, ye and नूना, नहीं. मैं, मीम, ये and नूना. तरजीह, ते, रे, जीम, ये, हे. तरजीह, देता, दाल, ये, ते, अलिफ. हूँ, हे, वाव and नूना. एक, अलिफ, ये, काफ. बालों का सलोन. बे, अलिफ, लाम, वाव and नूना.
का, काफ अलिफ का, सैलून, सीन ये लाम वाव नून. नाउ लेट्स राइट. नहीं, मैं बालों के सैलून को तरजीह देता हूँ. इन उर्दू we will type it on our virtual keyboard. So we can say नहीं, नून ए ये नूना. मैं, मीम ये नूना. मैं, बालों के सैलून. बालों can be typed as बे अलिफ लाम वाव नूना के, काफ बड़ी ये के, सैलून, सीन ये लाम वाव नून, को, काफ वाव को, तरजीह तेरे तर, जीम ये हे तरजीह, देता, दाल ये ते अलिफ. Who is a वाव एंड नूना. नहीं, मैं बालों के सैलून को तरजीह देता हूँ. No, I prefer a hair salon. And if I'm a female, then I will say नहीं, मैं बालों के सैलून को तरजीह देती हूँ. Now the next sentence is you need to reserve a spot at the hair salon. You is आप, need to ज़रूरत है, reserve is reserve, a spot एक जगह, at the पर, hair salon बालों का सैलून. Now let's translate. You need to reserve a spot at the hair salon. It can be translated as आपको बालों के सैलून पर जगह रिजर्व करने की ज़रूरत है. Now let's see how do we spell and type आप. आप is alif madda pe sakin. आप. ज़रूरत है can be typed as ज़वाद रे वाव रे ते. ज़रूरत and है is हे बढ़िए. Reserve is re ye वाव रे and ze. Reserve is re वाव re ye वाव reserve. Because it's an English word, so we will type it as re ye reserve. Ze and वाव रे reserve. एक जगह अलिफ ये काफ एक and जगह is जीम गाफ हे जगह. पर पे रे पर and बालों का सैलून is बे अलिफ लाम वाव नूना का, काफ अलिफ का, सैलून, सीन ये लाम वाव नून. Now let's write आपको बालों के सैलून पर जगह रिजर्व करने की ज़रूरत है. अलिफ मदा पे साकिन. आप को, काफा को, बालों के सैलून पर बेअलिफ बा लेहाम वाव नूना के, काफ बड़ी ये के, सैलून, सीन ये लाम वाव नून, सैलून पर, पेरे पर and reserve. So we will not write एक जगह. Usually in Urdu we say आपको बालों के सैलून पर रिजर्व करने की ज़रूरत है.
Reserve can be written as re ye ze वावरे reserve. करने काफ रे नून बड़िए करने ज़रूरत is ज़वाद रे वाव रे ते and है is हे बड़िए है. You need to reserve a spot at the hair salon. आपको बालों के सैलून पर जगह रिजर्व करने की ज़रूरत है और सिंपली वी कैन से आपको बालों के सैलून पर रिजर्व करने की ज़रूरत है. You need to book. Now let's translate. I would like to reserve for a haircut. I is मैं, would like चाहूँगा for male, चाहूँगी for female. To के reserve is reserve, for a के लिए और लिए. Haircut is haircut और बाल कटवाने. Now let's see how do we translate I would like to reserve for a haircut. In Urdu we will say मैं haircut के लिए रिजर्व करना चाहूँगा और मैं haircut के लिए रिजर्व करना चाहूँगी for female. Now let's see how do we type and spell मैं. मैं is मीम ये नूना मैं. चाहूँगा और गी चे अलिफ चा हे वाव नूना. गा is गाफ अलिफ गा and गी can be written as गाफ छोटी ये गी. चाहूँगा for male, चाहूँगी for female. के काफ बड़ी ये के रिजर्व रे ये जे रिस वावरे रिजर्व. के लिए काफ बड़ी ये के लिए इस्लाम ये हमजा बड़ी ये. And haircut can be बाल कटवाने or let's try to write haircut which is an English word in Urdu. So we will write he ye hair hamza re hair and cut is kaf take cut hair cut. Now let's see how do we type मैं हेयर कट के लिए रिजर्व करना चाहूँगा और घी. So मैं is मीम ये नूना मैं. Here is हे ये हमजा रे hair and cut काफ take cut. के काफ बड़ी ये के लिए इस्लाम ये हमजा बड़ी ये. रिजर्व रे ये जे वाव रे. करना काफ रे नून अलिफ करना. चाहूँ चे अलिफ हे वाव and नूना and ga for male or ghee for female. I would like to reserve for a haircut can be translated as मैं haircut के लिए reserve करना चाहूँगा and for female we will say ghee. Now the next sentence is the operator asks how about 3 p.m. on Monday.
Now, how is translated as कैसे, about, के बारे में. 3 p.m. is 3 बजे दोपहर, or simply 3, 3. On, पर, Monday is पीर. Now we can translate this how about 3 p.m. on Monday as पीर को 3 बजे कैसा रहेगा. Now let's learn to spell and type each and every word in this sentence. So कैसे is काफ ये सीन बड़ी ये कैसे. के बारे में काफ बड़ी ये के and बे अलिफ रे बड़ी ये. में is मीम ये नूना. 3 is 3, or let's write it down, which is te ye and noon 3. Par, pe re par. Peer is pe zer ye and re. Peer. So usually in Urdu we do not use zer zabar pesh while writing, but it's better that you should know that where are we using zer, because zer makes a sound of p, pe zer ye p. And there is another word pair, and the only difference is that it has zabar on top of pe zabar ye re. So when you will see peer or pair, they will be written in the same way, but you should know that they are two different words. Now let's translate पीर को 3 बजे कैसा रहेगा and type it down. पीर is पे जेर ये रे. पीर को काफ वाव को ते ये नून 3 बजे बीए जेम बड़िए बजे कैसा. काफ ये सीन अलिफ कैसा रहे रे हे बड़िए and ga is gaf alif ga. How about 3 p.m. on Monday? पीर को 3 बजे कैसा रहेगा, and in the end we should have a question mark because it's a question. Now the customer answers yes, 3 is perfect. So we can translate yes as हाँ, 3 as 3, is है, and perfect as बिल्कुल ठीक. Yes, 3 is perfect. हाँ, 3 बिल्कुल ठीक है. Now let's translate and spell and type हाँ in Urdu. हाँ is he alif nuna. हाँ. 3 te ye noon 3 है हे बड़िए है. बिल्कुल ठीक is बे अलिफ लाम काफ लाम. बिल्कुल ठीक टे हे ये काफ ठीक. Now let's type हाँ 3 बिल्कुल ठीक है. So we can type हाँ as हे अलिफ नूना. 3 ते ये नून 3 बिल्कुल बे अलिफ लाम काफ लाम ठीक टे हे ये काफ है is हे बड़िए. So yes, 3 is perfect can be translated as हाँ 3 बिल्कुल ठीक
है. The next sentence is, the operator says, we will see you at 3 on Monday. Now, we can be translated as हम in Urdu will, गे, because it's a future tense. So it should be गे. And see, देखें, you, आप, at 3, 3 पर, on, पर, and Mondays, पीर. So we can translate we will see you at 3 on Monday as हम पीर को 3 बजे आपको देखेंगे. Now let's see how do we spell hum and type it. He meme is hum. Ge is गाफ. बढ़िए गे. देखें दाल ये काफ हे ये and नूना. देखें. आप is alif madha पे साकिन आप. 3 is ते ये नून. 3 and पर is पे रे पर. पर is पे रे पर and पीर is पे ये रे पीर. Now let's see how do we type हम पीर को 3 बजे आपको देखेंगे. So we can say and type हे मिम हम पीर पे ये रे पीर को काफा को 3 ते ये नून 3 बजे इस बे जीम बढ़िए बजे and आप अलिफ मदा पे साकिन 3 बजे हम पीर को 3 बजे आप को काफा को and देखें दाल ये काफ हे ये नूना. देखें गे can be written as गाफ बढ़िए गे. So we have translated we will see you at 3 on Monday as हम पीर को 3 बजे आपको देखेंगे. Now the customer goes to the hair salon at 3 o'clock on Monday and the operator asks or the receptionist asks, do you have an appointment? Now do can be translated as क्या, you आप, have है, an एक, and appointment is appointment. And if we want to translate the whole sentence, do you have an appointment? Then we can translate it as क्या आपने appointment ली है. We can say कि आपके पास appointment है, but usually in Urdu we say क्या आपने appointment ली है. Now let's see how do we translate or how do we spell these words क्या आप है एक appointment in Urdu and type these words. क्या is काफ ये अलिफ क्या. आप is अलिफ मदा पे साकिन है ए बढ़िए एक अलिफ ये काफ. Appointment is अलिफ मदा पे appoint अलिफ अपा and appoint hamza
noon, meme, noon, te, appointment. Now let's see how do we type क्या आपने appointment ली है in Urdu. काफ ये अलिफ क्या आप अलिफ मदा पे साकिन आप ने नून बड़िए ने अपॉइंटमेंट अलिफ मदा पे अलिफ हमजा नून मीम नून टे अपॉइंटमेंट ली lam छोटी ली and है can be written as है बड़ी है appointment ली है and in the end we can add the question mark. क्या आपने appointment ली है? Did you take an appointment? So if we translate it in English then it means did you take an appointment? Usually we say it like this in Urdu.